Okay, students, we are starting. Let me ask you some important. How much you have yourself studied the ray optics? Okay, you can answer this question. आपने कुछ जनरली पढ़ा होगा, तो you can answer this. Okay, so you can speak. नारवी, सलोनी, रिया, निमिषा, कोई भी बोलो. देखिए, रे ऑप्टिक्स का सबसे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखिए, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, यू हैव चैटेड. ओके, उससे कुछ नहीं होगा. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकंड चैप्टर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म. रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म. एंड इन refraction through curved surface means lens. The fourth chapter is optical instruments. So these are the 4 chapters which are in your syllabus presently. Okay. तो यहाँ पर हम लोग do you know the Snell's law? I'm just asking you some important question. Please answer me. क्या आपको Snell's law मालूम है? Do you know the Snell's law? Or you do not know? Okay. ओके, धारवी बोलती है उनको स्नेल्स लॉ मालूम है, सलोनी को मालूम है स्नेल्स लॉ. रिया को भी मालूम है. अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हम पढ़ेंगे सारे. और एक 5वां चैप्टर ये भी है जो आपके कोर्स में नहीं है पर हमें जेई के लिए पढ़ना पड़ेगा. दैट इज रिफ्लेक्शन. मिरर्स. ये भी 12th के सिलेबस में नहीं है, बट वी विल स्टडी इट. तो ओके, रिया ने और धारवी ने और सलोनी ने, निमिषा ने स्नेल्स लॉ. तो हम एक इम्पोर्टेंट एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है. देखिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू. सारे चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन सबसे बड़ा चैप्टर है जो उसको पहले पढ़ेंगे, स्फेरिकल सरफेसेस. और स्फेरिकल सरफेसेस को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस. स्फेरिकल सरफेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्वेक्स spherical surface and we divide it into concave spherical surfaces. So convex is like this. This is convex. Concave, you must be familiar with the convex and concave. So every spherical surface has certain center of curvature and it has some radius also.
और देखिए कॉन्केव सरफेस का सेंटर यहाँ पर होगा, नोट करते चलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स के मेजर डेरिवेशंस पर हम लोग काम करेंगे वन बाय वन। एंड प्लीज चैट विद मी। कल भी क्लास है। Yesterday there was some internet issue. I have got a giga fiber connection. Some maintenance were going on. It happened for the very first time that there were no internet speed. That's why I was not able to conduct the class. Tomorrow I will conduct the class around 7:30. And on Sunday also around 10:30 or 11. We will have a morning class schedule. And we will have a continuous classes. At least 5 classes, minimum 5 classes in a week. अब देखिए, अब आप लोग कुछ फंडामेंटल बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस शुरू करेंगे। Please note it down and tell me whether you have noted down or not. Okay. तो पहले बिल्कुल फंडामेंटल ओके सलोनी भैया, व्हाट अबाउट निमिषा धारवी, हैव यू नोटेड डाउन? तो बिल्कुल पहले एक बेस फंडामेंटल लाइन क्लियर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डेरिवेशंस करेंगे, जितने भी डेरिवेशंस आते हैं लेंस कर्व सरफेस रिलेटेड वो सब करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जबरदस्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। So I have increased the number of classes for you. By 24th or 25th October, we must finish ray optics and what we call it, wave optics. Then we'll have a magnetism. It's a big chapter, lengthy chapter. Magnetism, magnetic effects of current, and the third and fourth, electromagnetic induction AC circuits are more very important. Okay, तो you have noted down. अब देखिए, सबसे पहले कुछ साइन कन्वेंशंस हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, एक ये कॉन्वेक्स सरफेस मैंने सिलेक्ट किया है और ये जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ spherical surfaces. This is first point. Second point, convex surface bends the light ray towards the principal axis. अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ये देखिए, ये हम इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। concave surface bends the light ray away from the principal axis. So please note it down. And when you will note it down,
इसको बहुत सीरियसली आप पढ़ना, ये बहुत टिपिकल चैप्टर्स हैं. We will cover refraction, general principle of refraction of light also, prism also. But if we want to begin with the typical chapter, lengthiest chapter, refraction through spherical surfaces and lens. Then we will cover the most important chapter, the optical instrument. ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए. ओके, रिया मैं नोट कर लिया. एंड प्लीज फटाफट नोट करो और मेरे को बताओ. Okay, we wrote it down. That's great. Nimisha, have you noted down? ठीक है. तो ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. अब देखिए अगला कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं. पहले बेस लाइन बनाएंगे. अब देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सपोज करिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है. ओके, और सपोज करिए देयर इज अ लाइट रे. लाइट रे, अगर सरफेस नहीं होता देन लाइट रे कुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट so towards the principal axis. It will bend the light ray towards the principal axis. So this is called converging nature. Converging nature of surface. Converging nature of convex surface. And suppose करिए कि अगर आपका surface concave होता. Suppose we have concave surface. तो क्या होता? तो light ray को ये कैसे bend करता? देखिए. This is a light ray. It bends away like this. This is called diverging nature. So it should be clear to you that converging means to bend towards the principal axis and diverging means to bend away from the principal axis. तो ये आपको रे डायग्राम्स को बनाने के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है. सबसे पहले इन मेजर चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे. Okay. So we'll have a more number of classes. Okay. Nimisha, you have done. Okay. तो ये अब देखो, अब अगला कंसेप्ट जो हमें सीखना है वो ये है. Sign convention. Let me write it properly. Convention. Sign convention for refraction at spherical. Why they are called spherical? Because they are cut from sphere. Spherical surfaces. So point number 1. The light rays are allowed to fall
on the refracting surface, on the refracting surface from left side. ठीक है, ये तो पहला साइन कन्वेंशन हो गया. अब सेकंड पॉइंट, all the distances, अच्छे से नोट करिए, are measured from the pole of the refracting surface along the principal axis. थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई विल मेंशन the distance. The distances measured in the direction of, अच्छे से लिखिए, in the direction of incident light, direction of incident light, in the direction of incident light are taken with positive sign. ये important बात है. The distances measured in the direction, है ना, in the direction opposite to the direction of incident light, incident light are taken with negative sign. तो जब हम डेवलपमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इस साइन कन्वेंशन को हम यूज करेंगे. So please note it down. Okay. Okay, Ria, what about you? Have you noted down? ठीक है बेटा, अब आप सब लोगों ने नोट कर लिया. देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब इसका कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अगला पॉइंट, द लेंथ ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, द लेंथ ऑफ image and object.
साइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. Object above the principal axis are taken as positive, and below the principal axis are taken as negative. अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं. Consider a convex surface, and this is the principal axis, for example, and this is the light ray. So this is considered as object, and this is considered as image, I and O. So here U is called object distance. I want to say that OP is U. What is U? Object distance. And PI is V. V is called image distance. And so this is incident light. So here, tell me the sign of OP. Minus, negative. And PI. Since it is measured in PI is measured, this is P. PI is measured in the direction of incident ray. This is PI. Let me elaborate you. So PI is taken as positive. And definitely somewhere this convex surface, this is C is the center of curvature. Center of curvature. And R is the radius of curvature. Radius of curvature. Here in this diagram, that is PC. That should be taken as positive because it is in the measured from P to C. Just look at the diagram measured from P to C in the right hand direction. तो जनरली स्टूडेंट मिसकंसेप्ट करते हैं, बोले राइट डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेफ्ट डिस्टेंस नेगेटिव है. नहीं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रे ट्रैवल कर रही है, इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट इंसिडेंट लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दैट इज व्हाई द लेफ्ट डिस्टेंसेस. यहाँ तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी. You will have big problems in numericals. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं. So please note it down. Okay. And this ray is called refracted ray.
When light ray changes its medium, then it is called refracted ray. That is the concept. Okay, Ria have noted down. Saloni. What about Dharvi, Nimisha? Please tell me. Okay, Nimisha is not in the class. She has again some issue with the internet. So we are going to complete a very important derivation. Okay, let's begin. आप अपनी बुक में भी इन सब डेरिवेशंस को देख लेना. Give the heading. Refraction at convex spherical surface. We are going to derive our first important result. Let me tell you, it is a very, very common example for 5 marks in board examination. If you go through your previous papers, you will find it. Let this is P. Let there is a point size object O. Point size object. At the point of incidence, एक मिनट मैं इसको अब थोड़ा अच्छे से डायग्राम को काफी बड़ा बनाएंगे हम. This is pole. Just look at the figure. At the point of incidence, we draw the normal. And stands for normal. And you must always remember that normal always passes through center of curvature. इस बात को ध्यान रखना. Center of curvature. So this angle is I, angle of incidence, and this angle is R. And you can name this point as A. Now, let me mark certain angles for you. कैसे angles को हम select करते हैं ये देखिएगा. Just look at. Let this angle is alpha. This angle is beta. This angle is gamma. Is it clear to you? You can speak. Yes, sir. Okay, only one person is speaking. Dharvi, is it clear to you? Riya? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है. अब देखिए ये प्योर ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है. आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं? What we want to do? We want to connect. We want to develop. We want to develop a relationship between object distance. We want to develop a relationship between object distance, image distance, and radius of curvature. We want to, again I'm repeating, we want to develop a relationship between object distance, image distance, and radius of curvature.
and refractive index of material and refractive index of material. अब हम एक और काम करते हैं यहाँ पे. Let me do it by, please understand, we draw a perpendicular. Let this perpendicular is M. Let AM is H. H means simply height, because we know that sine theta, cos theta, tan theta are only possible in right angle triangle. So we are constructing a right angle triangle from point A. From point A, we are drawing a perpendicular to the principal axis. Let the foot of perpendicular is M. Okay, तो अब देखो आगे हम बढ़ेंगे इसमें. Now we have to connect a relationship between angle. तो पहला Snell's law हम लगा देते हैं. Light is traveling from first, let this is first medium, let this is second medium. So we write 1 mu 2, or you can write as per your book 1 and 2 also. N is a number. It shows the refractive index. Snell's law, sin I by sin R. Since I and R very small, so we can write 1 mu 2, or you, what is your choice, may be equal to I by R. That is equation 1. Now look, triangle ACI. इसको आप देखिए, triangle ACI. Exterior angle is beta. Interior angles are R and gamma. Just I am talking about the triangle ACI. Internal angle, this is R, this is gamma, this is beta. So we have a property that exterior angle is the sum of two farthest. Exterior angle is the sum of two farthest interior angles. Are you getting it? So we can write beta equal to R plus gamma. So from here we will find R as beta minus gamma. This is equation 2. This is equation 2. This is equation 2. Now we will select another triangle. Just look at triangle AOC. This is, I am talking about this triangle. In triangle AOC, exterior angle is I and two interior angles are alpha and gamma. We are again applying the exterior angle is equal to the sum of two farthest interior angles. So what we can write? I can be written as alpha plus gamma. That is equation 3. Now we have developed 3 equations. So please note it down. This is a very important derivation. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? You can chat, you can speak. This is a, you know that ray optics is very tough. ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं. या तुमको समझ में आ रहा है? ओके, इसको नोट कर लो तो मेरे को बताओ आप, है ना. हमें बहुत लंबा चौड़ा काम करना है रे ऑप्टिक्स में.
टेक्निक्स यही है, स्नेल्स लॉ लगाओ और एंगल्स को नेम करो और एंगल्स में रिलेशनशिप डेवलप करो। तो अब आप देखो यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया रिलेशनशिप तो डेवलप कर ली। एक रिलेशनशिप डेवलप कर ली हमने, ये 1v2 इक्वल टू आई बाय आर, और ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरी रिलेशनशिप है आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो ये बच्चों रिलेशनशिप हमारी डेवलप हो गई। लेट मी राइट इट बिकॉज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So 1 mu2 equal to I by R, R equal to beta minus gamma, and I equal to alpha plus gamma. So we have got three relations. Okay, so please note it down. Okay. Okay. सलोनी ने नोट कर लिया, धारवी ने नोट कर लिया, नौरिया चैट विद मी। तो ठीक है बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने भी नोट कर लिया। अब यहाँ तक क्लियर है ना आपको? अब देखिए रे ऑप्टिक्स, इट्स वेरी typical theoretical mathematical chapter, but you don't need to be afraid. Within a week you will say that कि हमसे बन रहा है, I assure you for this. Okay, so I am moving to the next slide. So I have three relations, 1 mu 2 equal to, आप r भी लिख सकते हैं 1, and r equal to beta minus gamma second, and I have to write it over here because I have changed the slide, gamma. Okay. अब देखिए 1 mu 2 I can be written as alpha plus gamma and r can be written as beta minus gamma. So this is relationship number 4. If theta is a small angle, always remember theta can be written as sin theta, theta can be written as tan theta, theta can be written as थीटा। ओके, तो ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स आई वांट टू से दैट in this case you can write sin theta equal to tan theta. So it becomes tan alpha tan gamma upon tan beta minus tan gamma. ये भी मालूम होना चाहिए, cos 0 is 1, cos theta is 1. तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बैक स्लाइड पे जाऊंगा और आपने तो कॉपी में नोट ही किया होगा सामने। आपको tan अल्फा निकालना है, tan बीटा निकालना है और tan गामा निकालना है, और ये पांचवा इक्वेशन लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता that what number of equation we make, it is very important. So let's move back to the slide. Tan alpha, just see this triangle OAM, tan alpha is perpendicular upon base, AM upon OM. आप देखिए अगर आपको tan अल्फा निकालना है तो क्या होगा, just look at AOM, tan alpha is perpendicular upon
बेस। और टेन बीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए आप टेन बीटा कैसे निकालेंगे। ये आपका ट्रायंगल एएमसी हो गया, triangle AMC. Tan beta will be perpendicular upon base, so it will be AM upon MC. Okay, now look in triangle ACI. ये पहला हमारा कौन सा ट्रायंगल था? ट्रायंगल AOM में हमने tan अल्फा निकाला, और ट्रायंगल AMC में हमने कैलकुलेट किया tan बीटा। अब हम यूज करेंगे ट्रायंगल AMI। ट्रायंगल AMI, उसमें हम देखिए, आप डायग्राम देखिए प्लीज। tan गामा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो AM अपॉन MI, अपॉन MI। इज इट क्लियर टू यू? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इन वैल्यूज को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन वैल्यूज को लिखेंगे। tan अल्फा AM upon OM, but M is very near to P, so we can write OM equal to OP. OM equal to OP. So our tan alpha will become AM upon OP. AM upon OP. AM is plus H, OP towards left, so it is minus U. नोट करिए। सॉरी, वेरी सॉरी। देखो सलोनी, फिजिक्स में बड़ा क्लियर है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा स्मॉल है तो हम थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं। और कॉस जीरो वन होता है स्मॉल एंगल के लिए, इसलिए कॉस थीटा वन होता है। तो जब हमेशा याद रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ अगर आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस तो आपको सीखने पड़ेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताओ, फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना? तो ये नोट कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। रे ऑप्टिक्स में आप देखिए, हर साल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो आता ही है। क्यों आता है? अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो यहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा? 14 मार्क्स लाइट के लिए, 14 मार्क्स का पेपर है 70 में से, 20% वेटेज, वेरी हाई वेटेज। एंड प्लीज टेल मी, अगर आपने ऐसे बेटा नोट कर लिया है सब लोगों ने। इसको जरूर रिवाइज करना, क्योंकि अगली क्लास में तो क्या होगा, यही है अप्रोचेस हम क्या करेंगे, लेवल पे यूज करेंगे। आज आपके पास जो भी रिफ्रेशर वगैरह है, तो ये हो गया हमारा tan अल्फा को अब हम निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? प्लस एच अपॉन माइनस यू। ठीक है, तो प्लस एच अपॉन माइनस यू। अब आगे चल के हम इससे पुट कर लेंगे।
ये आप नोट कर लो। ओके, धारवी, रिया, आपने नोट किया? फिजिक्स रिक्वायर्स अ स्पेशल हार्ड वर्क। फिजिक्स में बहुत हार्ड वर्क है। धारवी ने भी नोट कर लिया, सलोनी ने नोट कर लिया, रिया तुमने नोट कर लिया? कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप बताना, मैं फिर से दोबारा करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो रिया प्लीज चैट विद मी whether you have noted down or not. इसी तरह अब हम tan बीटा को भी निकालेंगे, है ना। tan अल्फा चाहिए, tan बीटा चाहिए, और हमें चाहिए क्या चाहिए, tan गामा भी चाहिए। चलिए tan बीटा निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायग्राम देखिए, am अपॉन mc, और m को हमने रिप्लेस कर दिया p से, m p के बहुत पास है, pc, so tan beta will be am is plus h, upward distance positive, pc राइट हैंड में मेजर किया है, pc मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपने tan बीटा भी निकाल लिया। अब तीसरा हमें निकालना है tan गामा। थर्ड वी हैव टू फाइंड tan गामा। तो प्लीज इसको नोट कर लो, और यहाँ प्लस आर आएगा, here will have plus r, so we can have definitely h upon r, h upon r. Okay, okay, बाकी लोगों ने नोट कर लिया इसे। ऑल द डेरिवेशंस आर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, और बड़े जरूर हैं। तो 5 मार्क्स तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा। 14 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 70, लाइट, बहुत ज्यादा वेटेज है। R is the radius of curvature. फिर से R रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस, वो एक स्फेरिकल पार्ट है, इसलिए बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ स्फीयर। कोई इशू नहीं, आप पूछते रहो, आपको जो नहीं बनता है, whatever you do not get it, please do ask, क्योंकि ये देखिए, ये सारा टिपिकल डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है, मैथमेटिकल चैप्टर है, तो ये शुरू में आपको तंग कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको शुरू से ही पकड़ लेंगे अच्छा। तो हमने tan बीटा भी निकाल लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हमें निकालना है tan गामा। देखिए, सो tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक मिनट, अभी हम इसको ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल AMI, देखिए tan gamma, let's see the triangle AM upon AI, no, AM upon MI आएगा, I think AM upon MI, okay, please see the diagram, so it can be written as AM upon PI, because ये देखिए, ये P है और ये है M, they are very close, so we can write, okay, now tan gamma equal to plus H PI, right hand side distance, plus V,
अब देखिए हमारे पास जो पहला इक्वेशन था 1 म्यू 2, वो था टेन अल्फा प्लस टेन गामा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन गामा। ओके, तो यहाँ पे अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। टेन अल्फा की वैल्यू है प्लस एच अपॉन माइनस यू। टेन गामा की वैल्यू है प्लस एच अपॉन प्लस वी। टेन बीटा की वैल्यू है प्लस एच, अभी निकाली थी हमने, अपॉन प्लस आर माइनस टेन गामा प्लस एच अपॉन प्लस वी। सो 1 म्यू 2 इक्वल टू माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी अपॉन, एक मिनट, वी नीड मोर स्पेस ओवर हियर, let me write this way, minus 1 by u plus 1 by v अपॉन 1 by r माइनस 1 by v। ये देखिए ये रिजल्ट हमारा आ गया है। अब हम अगली स्लाइड में जाके इसको डेवलप करेंगे। विल डेवलप इन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये जरूर बता दीजिए। This is ray optics. This is very typical. And okay. ओके, नोट कर लिया आपने। बाकी लोग भी नोट कर ले, मेरे को बता दें नोट करके। And even if you do not understand, then I can repeat. There is no issue, है ना? उसमें कोई इशू नहीं है। So I have to move to the next slide. Have you noted down? Okay. So I am moving to the next slide. अब हम एक रिलेशनशिप, हमारा पहला डेरिवेशन तैयार है। तो ये था 1 म्यू 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी अपॉन 1 बाय आर माइनस 1 बाय वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 म्यू 2, एक मिनट, तो लेट मी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू 1 म्यू 2 बाय आर माइनस 1 म्यू 2 बाय वी। So this will get transferred. 1 by v is taken common. 1 plus 1 म्यू 2 minus 1 by u equal to 1 म्यू 2 by r. Now 1 म्यू 2 can be written as म्यू 2 by म्यू 1. Always remember. So 1 by v म्यू 2 by म्यू 1 minus 1 by u म्यू 2 by म्यू 1 r म्यू 1 r
कुछ लगता है मेरे को मिस्टेक हो गया है। लेट मी चेक इट। ठीक है। If first medium is air, medium is air. आप अपनी बुक से भी देख लेना. So mu1 can be written as 1 and let mu2 equal to mu. So we will have 1 by v, 1 plus mu minus 1 by uh, uh, minus 1 by u equal to mu by r. So mu by v minus 1 by u, mu by r minus mu by v. ठीक है. आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे डेरिवेशन में, मेरे को चेक करना पड़ेगा. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई. ये देखिए, वी हैव डन अ मिस्टेक, वी हैव डन अ ग्रेट मिस्टेक. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स. देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई था और हमने लिख लिया आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. सो दिस मिस्टेक वी हैव डन. तो अब हमें ये दोबारा सब करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, वी विल हैव अ लॉन्ग क्लास, कोई इशू नहीं है. अब आप सबसे पहले इधर सुधारो. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर. एक भी गलती है, देखिए हमसे यहाँ सबसे बड़ी गलती हो गई. दिस इज द मिस्टेक व्हिच वी डिड. ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ये रहा ट्रायंगल. तो ये इंटीरियर एंगल्स बीटा थे, तो ये हम यहाँ गलती कर गए. तो आप जरा इसको करेक्ट करते चलो. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ये तो रे ऑप्टिक्स में ये सब होता ही है. इसको सुधार लिया आपने, प्लीज चैट करके बाय बाय करते चलो, तो मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ. देखिए, एक आंसर अब हमारा ये गलत हो गया आंसर. तो यहाँ हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा. ओके, नारवी ने इसको सुधार लिया. तो ये हमारा रिलेशनशिप देखिए, अब ये दोबारा हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा. आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बस यही, बाकी सब सही था. तो गामा की जगह हमें बीटा करना है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, अब ये हमारी गलती यहाँ पे हमें सुधारनी पड़ेगी. हियर वी हैव टू मेक ए करेक्शन. ये देखिए, तो मैं करेक्शन को रेड से कर देता हूँ. दिस इज बीटा. और फिर अगला करेक्शन, बाकी तो सब मेथड वही है. 10 बीटा. बाकी तो सब ठीक है. इसको जरा सुधार लीजिए. अब ठीक आ जाएगा हमारा रिजल्ट. अपॉन 10 बीटा माइनस 10. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आपका इसमें यहाँ टाइम खराब हुआ. बाकी हमने सही किया, बस हमें जहाँ जहाँ अल्फा था उसकी जगह बीटा रखना था. और 10 बीटा हो गया एच बाय आर. तो यहाँ हमने इसको करेक्ट कर दिया. अब हम आगे पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे फिर हमें एक करेक्शन की जरूरत है. अगेन वी नीड टू करेक्ट. ये देखिए, ये हमारा 10 गामा नहीं है. Actually, it is 10. This is not 10 gamma. This should be 10 beta. So let's make it 10 beta. अब फिर बाकी वैल्यूज तो हमने सही दी है. अब यहाँ पे हमें 10 बीटा की वैल्यू रखनी है.
तो इसको भी सुधार देते हैं और टेन बीटा की वैल्यू है एच बाय आर। एच बाय आर देखिए सब गड़बड़ कर दिया। एच बाय आर, एच बाय आर। तो अब ये फिर हमें यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा वन बाय आर। देखिए पूरा क्वेश्चन में बस ये गड़बड़ी जो रेड से है वो करेक्शन से। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय आर इन फ्लो। समटाइम्स किसी से भी गलती हो सकती है। ओके, अब आप इसको नोट कर लो। अब आपने इसको करेक्ट कर लिया है, ये बताओ आप हैव यू करेक्टेड? सिर्फ वाई आप लिख दो, है ना? तो करेक्ट कर लो। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और आज ही अपने रिफ्रेशर से इसे क्या कर लेना, कवर कर लेना। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो आपने इसे कवर कर लिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ की पूरी इनको इरेज कर रहा हूँ और मेरे पास अब फॉर्मूला था वन यू टू इक्वल टू माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय आर। अब बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा वन बाय आर माइनस वन बाय वी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। वन म्यू टू बाय आर माइनस वन म्यू टू बाय वी इक्वल टू माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय आर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दे और इसको इधर ट्रांसफर कर दे, तो ये हो जाएगा वन बाय यू माइनस, अब आपका रिजल्ट आ गया v इक्वल टू वन बाय आर माइनस वन म्यू टू बाय आर। वन म्यू टू बाय आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो v को थोड़ा पॉजिटिव रखते हैं। माइनस वन बाय यू वन म्यू टू बाय आर माइनस वन बाय आर। तो अब आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए वन म्यू टू बाय वी माइनस वन बाय यू, वन बाय आर कॉमन ले लो, वन म्यू टू माइनस। और आगे चल के आप एक और काम कर सकते हैं। वन म्यू टू को आप लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू टू को लिख दे म्यू और वन को लिख दें अगर फर्स्ट मीडियम इज, इफ ऑब्जेक्ट, if first medium is air, first medium is air। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। लेट मी राइट हियर म्यू बाय वी, ये आपकी किताब का फॉर्मूला तैयार हो गया। वन बाय यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, म्यू को एन भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। You can go through with your NCERT for this derivation also. So this is the we have just started the, इसको नोट कर लो आप। And please tell me if you note it down। अभी हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया। देखा आपने एक एंगल का मिस्टेक तो क्या क्या हो जाता है। So that is why the ray optics is a typical chapter। इतना आपको समझ में आया, आप मेरे को जरूर चैट करिए और मुझसे बोलिए भी। और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए आपने इसे नोट कर लिया? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अब देखो मैंने सोचा था आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो किताबों में म्यू बोला जाता है या म्यू और एन से डिनोट किया जाता है। नंबर, रिफ्रैक्शन नंबर। डू यू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने एनसीईआरटी ओपन किया तो वहां आपको म्यू की जगह एन मिलेगा, किसी बुक में म्यू मिलेगा। तो दोनों बातें ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है? एवरी वन ऑफ यू शुड चैट विद मी दैट यू हैव नोटेड इट डाउन। ओके, रिया ने भी नोट कर लिया, चलो नहीं तुमने नोट कर लिया। इसको प्लीज प्लीज आज रिवाइज जरूर करना। ओके, तो मजा आएगा रे ऑप्टिक्स में। पहले दिन ही हम लोगों ने रैंडम मिस्टेक कर दी, गामा लिख दिया बीटा की जगह, तो देखिए नतीजा क्या आया। तो इवन देन यू नीड टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस ऑन इट। तो इसको एंड कर रहे हैं, एंड टेक केयर, स्टे सेफ। स्कूल खुल रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिसाइड करेगा आपको जाना है कि नहीं। मैं होता तो नहीं जाता, दिस आई कैन से। ओके बेटा, टेक केयर। कल क्लास है 7:30 और इसी में आगे